Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. So last week we have studied about different type of irradiation. First was super voltage irradiation, second one interstitial irradiation, that was brachytherapy, then third one neutron beam and proton beam therapy. Then we have studied about hyperfraction radiation, oxygen enhancement, drug enhancement, and then intensity modulated radiation therapy. We'll be continuing intensity modulated radiation therapy today. Okay, let's start. So last class we have seen intensity modulated radiation therapy. It is designed to give a higher dose of radiation to the primary cancer site and spare the skin and other tissues, but it causes osteoradionecrosis, prolonged mucositis, and painful radiation neuritis, and it is most commonly used in squamous cell carcinoma. Then we have seen some facts concerning the cell radiosensitivities about the mitosis and meiosis phase. Okay, and in that we have seen that mitosis phase and G0 and S borderline phase is radiosensitive, G0 phase and S phase are radioresistant. Okay, and G1 is also sensitive phase. Now coming to all, at the clinical level, less tissue damage occurs with the same total radiation dose if the internal interval between the radiation exposure is lengthened. Okay, अगर क्लिनिकली हम लोग देखते हैं तो टिश्यू डैमेज कम होगा जब टोटल रेडिएशन डोज तो सेम है, लेकिन उसका जो इंटरवल है रेडिएशन एक्सपोजर का वो हम लोग बढ़ा दिए, तो इट कॉज लेस टिश्यू डैमेज इफ द इंटरवल बिटवीन द रेडिएशन एक्सपोजर इज लेंथेंड. The reason for this is cellular recovery and attempts at the normal cellular repair. सेलुलर रिकवरी हो जाता है इस बीच में, और जो नॉर्मल सेल रिपेयर है वो होना स्टार्ट हो जाता है. एंड वी नो द फैक्ट दैट नॉर्मल सेल रिपेयर एट द फास्टर रेट दैन द कैंसर सेल. तो मेनली ये एक कह सकते हैं कि ये एक एडवांटेज है इस पीरियड का. अगर हम लोग लेंथन कर देते हैं एक्सपोजर तो हमारे जो नॉर्मल सेल है उनको रिपेयर करने का टाइम या रिकवरी का टाइम मिल जाता है. ओके, नाउ interstitial radiation even at a lower doses will cause a much greater degree of cellular damage due to constant radiation effect. तो जो interstitial radiation है that is brachytherapy, उसमें lower doses में भी cellular damage ज़्यादा होगा because the radiation which is given is at the constant rate. The constant radiation exposure of interstitial radiotherapy affects cell more often at their sensitive portion of the cycle. और ये जो इफ़ेक्ट होता है इनका, मतलब इंटरस्टिशियल रेडिएशन का थेरेपी का, वो मेनली होता है व्हेन द सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द साइकिल, व्हेन द सेल इज एट द सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द cycle. Now, with fractionated external beam irradiation, the probability of catching the faster proliferating tumor cells in sensitive portion of their cycle increases with the number of fraction. As it is fractionated, तो जो catching the faster proliferating tumor cell in sensitive portion increases with the number of fractions. Okay, that's all about radiotherapy and radiotherapy principle and different types of radiotherapy. Now we'll be starting the chemotherapy principle. Okay, I'll tell you one more thing, कि what I am discussing in this is totally from the point of view कि हाँ कैंसर में क्या क्या होता है, कैसे, मतलब कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आर टोटली अ डिफरेंट टॉपिक, अ ह्यूज टॉपिक, बट इट्स जस्ट अ ब्रीफ. अगर आपको कैंसर के बारे में लिखना है तो यू शुड नो दैट कि ऐसा ऐसा होता है. ओके, mainly oral squamous cell carcinoma I am taking in account. Okay, chemotherapy principles. The main problem faced is the effective control of a tumor without inducing intolerable and even fatal toxicity, same as radiotherapy.
जो इफेक्टिव ट्यूमर कंट्रोल होता है वो कम होता है। ठीक है, ओके, विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।